Okay, dear students, how are you? I hope you all are fine and staying safe in your homes. Yes. Well, today we are going to take up a very important topic, and that is from our writing side. And the topic is called note making. This is note making. What this note making is? You may find a passage. I have given a paragraph on the board, and this paragraph may be related to any topic. When it is, you find it in exam, that paragraph may be related to any topic. Dear students, what actually this note making is? The name itself suggests what is a note making. And this is not very new, something new for you. You have been doing it from the very beginning of class 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knowingly or unknowingly, you are doing this note making for a long time. But as a topic, it has been given in the syllabus of class 11th and 12th board. This note making is, as I said, this is nothing new. What this actually is? This is actually, you just, whenever you are, reading any book, any topic, it may be in science, it may be in any subject of humanities, it may be any subject, or you may be reading newspapers, you may be reading any magazine. You need this note making. In our mind, while we read something, we are just making notes in our mind. What is this note? Note is just noting down, writing down, jotting down the important points of a paragraph. Important points of a paragraph or of a whole chapter. But this is, as a part of our syllabi, this is a scientific and systematic way of putting down, noting down the important points of a paragraph. Scientific and systematic. Not that randomly we pick up anything and we start thinking and assimilating in our mind and brain the important points from here, and randomly we cannot pick up the random points from a topic given or paragraph given. Rather, to put the important things, to put the gist of the paragraph or a chapter in a systematic way. This system is called note making. Then there are some do's and don'ts. We will discuss it later. First, today we will directly go as to how to do it. We will go to that thing directly without discussing much about the propagandas and rules and regulations, not like that. We will just, it is very simple, you are doing it already, just see how to do it. Today this is a paragraph, you may see. I don't know this is visible or not, but anyhow we have to do it. I will read it aloud first for your convenience. Effective speaking depends on effective listening. It takes energy to concentrate on hearing and to concentrate on understanding what has been heard. Incompetent listeners fail in a number of ways. First, they may drift. Second, they may find counter arguments. Third, they compete. Then they filter those ideas that does not suit them. Finally, they react. They let personal feelings override the significance, the message being sent. So this is a paragraph. If you read it, you will understand that this is about the art of effective listening. This paragraph is about the art of
effective listening. What is effective listening and how to do it and how people fail in it. This paragraph discuss all those things. तो मेरा मतलब ये है कि ये पैराग्राफ इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में है. लिसनिंग, व्हाट इज लिसनिंग? यू नो, लिसनिंग एंड हियरिंग. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स? आई होप यू माइट बी नोइंग इट. हियरिंग इज means hearing something means knowing something or very randomly or in a casual way. When we hear something in a casual way, that is hearing, and we hear something in very attentive way, that is called listening. We listen something, it means, it signifies that we are very very focused, we are very very attentive. We hear something means we are not focused, we may not be interested in that thing, or we are not concentrated on that. That becomes hearing. ठीक है. तो हम जब क्लास में बैठते हैं तो हमें लिसनिंग करनी चाहिए, नॉट हियरिंग. हियरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्लासरूम. When we talk to our friends, hearing is okay. We hear something what they are saying, because that is very casual means kind of meeting. Anyway, so hearing and listening. So this is about the art of effective listening. How the listening becomes effective, how people fail the listening. So if you get any paragraph for note making, what to do it? Just find out the gist of that paragraph, and that gist gives us a suitable title for the paragraph. So we may have a title, the art of, I am writing it, noting it down. Title may be the art of effective listening. Means I want to say that whenever you get a paragraph, जब भी आपको कोई पैराग्राफ मिलता है तो आपका पहला काम क्या है? उस पैराग्राफ को पढ़ें. पढ़ने से क्या होता है? हमें उसकी कंटेंट के बारे में आइडिया मिलता है, और उस कंटेंट से हमें क्या पता चलता है कि व्हाट मे बी अ वेरी गुड टाइटल फॉर, सुटेबल टाइटल फॉर दैट पैराग्राफ. टाइटल हमने दे दिया इसको, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. तो दिस वाज द फर्स्ट टास्क, वी हैव डन इट very successfully. We have done it. What is our second task in paragraph? Our second task is to find out the important points in that paragraph. How to do it? You can, to find out the important points, you can read the paragraph 2 or 3 times, and gradually you will find out the important things in the paragraph. First, this paragraph, effective speaking depends on effective listening. This is an important point, effective listening. This paragraph talks about what? Effective listening. I have underlined it. ठीक है ना. आप भी जब कोई बुक पढ़ते हैं तो बहुत बार आप क्या करते हैं, पेन या पेंसिल से आप बहुत सारी चीजों को अंडरलाइन करते हैं. क्यों अंडरलाइन करते हैं? वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. तो दिस इज ऑल्सो, नोट मेकिंग इज नथिंग समथिंग, नॉट समथिंग स्पेशल. इट इज ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग आउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स इन अ पैराग्राफ और अ चैप्टर और एनीथिंग, एनी आर्टिकल वी गेट. तो इफेक्टिव लिसनिंग, it takes energy to concentrate on hearing and to concentrate on understanding what has been heard. Concentrate on hearing. Effective listening depends on concentrating on hearing and concentrating on, हम कोई चीज ध्यान से मतलब अच्छे से सफलतापूर्वक कैसे सुन सकते हैं? जब हम कंसेंट्रेट करेंगे हियरिंग को कंसेंट्रेट करेंगे, और कंसेंट्रेट करेंगे अंडरस्टैंडिंग को. व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स क्लियरली, लूसिडली एंड कंप्लीटली, ओनली देन दैट विल बी अ सक्सेसफुल लिसनिंग. तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है इन 2 चीजों को. आफ्टर इट, व्हाट हैज बीन हर्ड. Incompetent listeners
अब किसके बारे में बात कर रहा है ये पैराग्राफ? इनकम्पिटेंट लिसनर्स, दोज लिसनर्स दैट आर नॉट कॉम्पिटेंट, मीन्स वो सक्सेसफुली किसी चीज को लिसन नहीं कर सकते, बस सुनते हैं और उनके दिमाग में कुछ बातें रहती नहीं है। तो वो क्यों ऐसा, वाई दिस हैपेंस, वाई सम पीपल आर इनकम्पिटेंट लिसनर्स, they are unable to understand the things they listen or they hear, why this happens, what is the reasons? So now this paragraph is talking about reasons. Reasons of what? Reasons why some people fail to understand what they listen. जो सुनते हैं उसको कैसे फेल हो जाते हैं। तो इस पैराग्राफ की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन्स ऑफ मीन्स इनकम्पिटेंट लिसनिंग. Incompetent listeners fail in a number of ways. Means there are so many ways. First reason, they may drift. First reason क्या है? Drift करते हैं. Second, they may find counter arguments. May find counter arguments. Third reason, they compete. And then they filter. Compete करते हैं. जो स्पीकर बोलता है उससे अपने थॉट्स को क्या करते हैं? मैच करते हैं और फिर क्या करते हैं? वो अपने थॉट्स को उसके थॉट से मैच करते हैं और compete करने लगते हैं. मीन्स दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आइडियाज, रादर दे आर जस्ट विलिंग टू रिजेक्ट दोज आइडियाज अकॉर्डिंग टू देयर ओन आइडियाज. तो इससे हम क्या हो जाते हैं? फिर दिस इज थर्ड रीजन, दोज दैट डज नॉट सूट देम. फाइनली जो उनको सूट नहीं करता है वो आइडियाज को रिजेक्ट कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं. फाइनली फाइनल रीजन, दे रिएक्ट. व्हाट इज द थिंग? दे रिएक्ट करते हैं. हाउ? कैसे रिएक्ट करते हैं? इट हैज बीन गिवन, दे लेट पर्सनल फीलिंग्स ओवरराइड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैसेज बीइंग सेंट. अपनी पर्सनल फीलिंग्स को आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन पर्सनल फीलिंग्स, दे रिजेक्ट द आइडियाज गिवन बाय द स्पीकर. ठीक है. एंड द होल पर्पस इन दिस वे, द होल पर्पस ऑफ स्पीकिंग, द होल पर्पस ऑफ द मैसेज इज destroyed and there remains nothing in their brain, because all the time they are listening, they are just competing, either drifting or competing or rejecting those ideas or fighting those ideas, or they are busy with matching those ideas with their own ideas and rejecting them. Anyway, we are not concerned with what happens, what is the psychology. We are just concerned with what are the important points in this paragraph. So I have underlined the important points. Dear students, if you get any paragraph in your exams or anywhere for note making, just try to find out the important paragraphs, important points, and underline them or note them down. Just note down them in any paper. Okay, this is our first work. Second work means, first work is getting a title. हमने एक टाइटल खोजना है. दूसरा काम क्या है? हमें उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है या नोट डाउन कर लेना. नाउ थर्ड टास्क टू अस रिमेन द नोटिंग देम डाउन. ये जिनको अंडरलाइन किया है इनको नोट डाउन कैसे करेंगे? देयर इज अ नंबरिंग सिस्टम. हाउ टू नंबर देम? ऐसे नहीं नोट डाउन कर लेंगे जस्ट कि रैंडमली नोट डाउन कर लिया. नो, जस्ट पुट नंबर्स बिफोर द आइडियाज. हाउ टू पुट दिस नंबर्स? देयर आर आइडियाज. ठीक है. देयर आर सब आइडियाज. एक जो आइडिया है हमारा क्या है? इफेक्टिव लिसनिंग. इससे रिलेटेड कोई आइडिया है, दैट इज सब आइडिया. और उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस आया है, दैट इज सब आइडियाज. 3 kinds of things are there. Idea or concept, anything you may name them. Ideas or concept, sub ideas or sub concepts, सब आइडियाज और सब कॉन्सेप्ट्स. एक जो मूल आइडिया है, व्हाट इज द चीफ आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. व्हाट इज द सेकेंडरी आइडिया रिलेटेड टू द सेंटर. उस आइडिया से एक रिलेटेड आइडिया हो गया. और फिर उस दूसरे आइडिया से रिलेटेड और कुछ रेफरेंसेज हैं, दे आर सब कॉन्सेप्ट्स.
So 3 kinds of concepts are there. Okay, we will do it in the next class. Thank you. Have a nice day.